We are live now. Hello, am I audible? Yep. So we are beginning today with something called as numerical methods, and now today we are going to see numerical methods related to what we call numerical methods of differential equation. Equations. All right, let's do this. Yeah, maybe we'll need a bit a smaller one. Yeah, this can do. Or let's keep it a big one, the biggest, and that would work. Hello everyone, and welcome to the new lecture series of differential equations. So now we are beginning with the new method ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले आप इतना ध्यान रखें कि हम लोगों को बहुत सारे इसमें मेथड्स होते हैं. बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड बहुत सारे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के. तो हमारे यहाँ पर हम कौन कौन से डील करने वाले हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ. सबसे पहला एक मेथड डील करेंगे है वो है ऑयलर्स मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एक है. दूसरा एक मेथड आएगा ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एक रहेगा. The next method that we will be seeing is one very important and a very easy method which is called Runge-Kutta method, or yeah, method of fourth order. And then there is one more method is there which can be Taylor series method. We will see this Taylor series method, but then this can be kept as optional also. If at all it is asked, then we can go in detail about it. But then as you see, there are these four methods are there. Okay, ये चार मेथड आप देखेंगे. हेलो दोज हु आर देयर ऑनलाइन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज एंड आपका स्वागत है. आ जाइए. ठीक है. आई होप आई एम ऑडिबल ओवर हियर एंड yeah. So let's begin regarding Euler's formula. Now Euler's method has some important thing to understand how to handle. Now see why these methods are there, I'll tell you. And because see there are several other methods
Okay, not only these are there in most of the syllabus as an introductory methods, that's why I'm dealing them. Otherwise there are many methods are there. One more important thing I would like to tell you is that whenever we do any solving of a differential equation, remember that most of the differential equations, solving them with the analytical method is a difficult aspect. Okay, it's a very tough aspect when you solve differential equations with analytical methods using those formulas which are given to you. First you need to classify the differential equation, then you need to see which format it is following and what solution and what kind of methods are available and other etc stuff. With numerical method, first ease is that you can without even not knowing much regarding the type of the differential equation and not too much but not in great detail, then you can still solve them. Okay, and what happens is that you try to find an approximate solution which is very much near to the exact answer. So that is a very good thing. You don't have to do too much of integration and solving and all that. So this is the plus point of numerical methods. And remember, most of the differential equations get solved numerically. Okay, the numerical methods are much more convenient rather than the analytical method. The reason is the ease and the computational uh, quickness, I would say, rather not the computational complexities, but the quickly it gets solved, it is much more easier. Okay, so let me give you the Euler's method formula. Let's begin now. ये है हमारा ऑयलर मेथड, हम चालू करने जा रहे हैं. ऑयलर्स formula या ऑयलर्स मेथड, you can call method for solving differential equation. ओके, तो ये मेथड में ज़्यादा ये सारे क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल आईवीपी रहेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. हेलो, या वी हैव some people there. Hi, welcome to the live. ये सब मेथड जो होंगे ना, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम सिंपल वर्जन वाला दिया रहेगा, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. तो आपको इतना ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा एकदम सिंपल वे में दिया रहेगा आपको. तो मैं आपको इसमें मेन फार्मूला पहले दे देता हूँ और बाद में डेरिवेशन के बारे में हम बाद के कोई लेक्चर में बात करेंगे. अभी फ़िलहाल मेन फार्मूला एंड the focus will be on the most of the important methods that we are following. So consider, I'll keep this a little bit fat. Okay, consider the differential equation कुछ इस प्रकार का होगा. dy बाई डी एक्स, ये आपका एकदम सिंपल फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पर एकदम इजी वे में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपका आईवीपी ही रहेगा मोस्टली. ओके, बीवीपी तो नहीं करते इसको, तो आईवीपी रहता है. आईवीपी यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. ओके, ऑफ दिस फॉर्म. बाद में हम यहाँ पर लेते हैं let x1 equals to x0 plus h. Okay, where h is very small number, where h very
small. Now h is very small. H is an increment. Okay, h is just an increment. You, if you want to remember, you can keep this here. H is an increment generally, or you can even call h as a, you can even call this as step size rather than step size, because it is a two-dimensional thing. I would avoid using that word step size because it is in two dimension you walk about it. So but still it's okay. So the formula over here is, here Euler's formula is given by yn plus 1 is equals to yn plus h times f of x n yn. Okay, h times f of x n by n, where n goes from 0 1 2 and so on. Now this is the main formula. ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया है. ये आपने लिख लिया है, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. This is the main formula, and you can even remember these conditions. Okay, but that is what is main. Here it is plus. Now let us see how to solve the questions related to this, and we will take a very simple example, because these examples you can even draw. You can, if you understand the calculation, you will need a calculator for this and nothing much about it. Okay, आपको calculator लगेगा. You will need calculator here. Okay, so let us start. Now calculation of a question, and we'll take up a question which is there for most of the time. These questions come in the examination generally for 6 marks or 7 marks or sometimes even 8 marks also, depending upon how difficult the question is asked. I would suggest always that you go up to minimum 4 decimal places so that your answer is without any ambiguity and it works well. So let us take up the question. Here we'll take up the following question. Use the Euler's method. Use Euler's method to find the the approximate value of y when x equals to 1.5 in 5 steps, taking h equals to 0.1 when dy by dx is equals to x minus y, or wait, here it is y minus x upon square root of y x, and y of 1 is equals to 2. Okay, now this is the question given to us. I'll tell you how to handle this.
a very easy thing is there. If you understand the important thing over here, that you just need to understand the formula carefully, nothing more is required. Here you can get all the things, everything will be given to you in the question, nothing much big things are there. So just see here, we are given everything in the question. First, given, we write like this: given differential equation, given DE is dy by dx y minus x over square root of yx with y1 equal to 2. All of you wrote down this question? Yeah. So now once you are written down this question, you get all the stuff that you want from the differential equation itself. So compare this given condition, which is this condition y1 equal to 2, with the given differential equation that we had taken over here with y of x naught equal to y naught. ओके, सो ये कंडीशन दिया हुआ है आपको, इसके साथ आप कंपेयर करें. सो दिस इज वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट बेसिकली, राइट. वंस यू कंपेयर यर, यू गेट योर फर्स्ट पार्ट दैट यू हैव बीन गिवन, आपको दिया हुआ है व्हाट इज एक्स नॉट. सो योर एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई नॉट is equals to 2. Okay, what is the meaning of y1 equal to 2? It means that when x naught is 1, y naught is 2. That is the meaning over here. ये समझ में आ गया? Okay, also यहाँ पर आपका फंक्शन f of x, y क्या है? फंक्शन है आपका y माइनस एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ वाई एक्स. ओके, ये स्क्वेयर रूट ऑफ वाई एक्स ये हमारा फंक्शन है. डी वाई बाई डी एक्स तो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अटैच होके आया है, पर द मेन फंक्शन तो यही है हमारा. अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे. तो अभी आप अपना कैलकुलेटर तैयार रखिए, हम लोगों को कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और हम लिखेंगे. चलिए, तो अब यहाँ पर लिखते हैं बाय ऑयलर्स फॉर्मूला वी हैव yn plus 1 is equals to yn plus h times f of xn yn बराबर. ये फॉर्मूला था हमारा, where n goes from 0 1 2 3 and so on. तो अब हम देखते हैं कि इसको यहाँ कैसे करने का है. तो आप यहाँ पर अब लिख दीजिए following table shows the calculations. Okay, following table shows the calculations, ये आप लिख दीजिए. तो अब हम टेबल बनाते हैं. तो पहला कॉलम बनाइए n का, एक n का कॉलम बनेगा, यहाँ पे n लगेगा. दूसरा कॉलम बनाइए आप xn का. तीसरा कॉलम बनेगा yn का. चौथा कॉलम बनेगा, h का भी बना सकते हैं अगर आपको बनाना है तो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर यहाँ पर आप, ठीक है कोई बात नहीं, h लिख दीजिए. पर यहाँ पर h लिखने के बाद आपको एक कॉलम लगेगा f of xn yn का.
ये कॉलम लगेगा, और लास्ट में जो कॉलम आएगा आपका वो है वाई एन प्लस वन का आएगा, जो आएगा वाई एन प्लस वन लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ये इसका कॉलम आपके पास आएगा। तो ये कॉलम में आपका एडिशन होकर आएगा एज पर द फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर n को सबसे पहले 0 डालेंगे तो हमको मिलेगा x0। x0 हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो है 1, बराबर। x0 इज 1, तो y0 जो बन के आया है वो है 1, सॉरी y0 हमारा बन के आया है 2, बराबर। y0 2 बन के आया है। अब हम लोग h देखते हैं। h हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, टेकिंग h एज 0.1, तो हम h को 0.1 यहाँ पर लिख देते हैं। h इज 0.1, सो 0.1 दिया हुआ है। अब f ऑफ एक्स एन वाई एन कैलकुलेट करना है। f ऑफ एक्स एन वाई एन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, हम लोगों को फॉर्मूला में यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x0 y0। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैं फर्स्ट कैलकुलेशन डिटेल में बताता हूँ जो आप लोग कर सकोगे। सेकेंड ऑनवर्ड्स आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो y0 माइनस x0 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ y0 x0। सो ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में कर रहे, और देखिए कितना आता है। तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर 2 माइनस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी 1 अपॉन रूट 2 का आंसर निकालना है। ये कुछ आंसर आपको मिलेगा अराउंड 0.70701, ऐसा कुछ आंसर मिलेगा। 70701, देखिए कितना मिलता है। चेक योर आंसर, all those of you are calculating। हम्म, 0.01 आ रहा है, ओके। यहाँ पर 1 आ रहा है, डायरेक्ट 10 आ रहा है, ओके। So here you get this answer. Now when we calculate further, this answer yn plus 1 का जो आंसर आएगा, ये आएगा आपका y1 का आंसर रहेगा। So y1 value is obtained by using the formula. So formula, it is basically 2 plus 0.1 multiplied by 0.707। आप वो करें उधर तो आपको वहाँ पर वो वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना आता है आपका फर्स्ट आंसर, y1 विल बी 2 प्लस 0.1 multiplied by 0.7071। Here you get your answer. So how much are you getting? All those of you are there online, please calculate for yourself and let me know how much you get. You will get here your answer as y1 as 2.07071, right? That is what you will get. So you go up to 4 decimal places. Even if you go up to 5 decimals, that would be fine. So let's take, we will go up to 5 decimals. We'll go 5 decimal. For the best accuracy we will consider at 5 decimals, okay? So this is what we get. Now next one. Now you got y1 when n is 1. Now n is 1, I'll get x1. What will be my x1 here? X1 will be, see the formula we have written here. In the beginning only we wrote that x1 is x naught plus h. So now basically x naught plus h. So here we will have 1
0.1 is what we will get the next one. And what will be y1 we already found, which is 2.07071. That is what we have found, and this is 0.1. Okay, so draw your columns here carefully, and yeah, you will need the columns. Yeah. Now we calculate the value of the function over here. All those of you are calculating online, please calculate over here. So here we will now need f of x1 y1. F of x1 y1 will be y1 minus x1 over square root of y1 x1. So I am doing it over here with the basic understanding. You can write your answer directly also from your calculator. So 2.07071 minus 1.1, right, divided by that answer is divided by the square root of the product, right? So it is going to be 1.1 times 2.07071. So here the answer is 0.64318. Okay, so now we calculate y2. So y2 is basically nothing but, as per the formula, it is y1 plus h times f of x1 y1. Okay, x times x1 y1, f of x1 y1. When you calculate, you will get the answer. So it is now going to be the answer added with, so the answer is added, no, yeah, answer is added with a multiplication of 0.1, and you add it to that 2.1. Yeah, 2.07071. Yeah, you add that, you get it is 2.13502. That's what you get. 028 if you consider, then it is 2.028, so I'm considering it's 3, I'll take it, no problem. Now let us go up to the next one. So here x2 is going to be 1.1 plus 0.1 you do, so here it is 1.2 is your this one. X2 formula is what? Now x2 is basically x1 plus h, remember this. So now y2 we have already found, it is 2.1350, and now here you have 0.1. so f of x2 y2, what is it going to be? Let us calculate it quickly. So it's going to be 2.13503 minus 1.2, that whole answer, the answer is divided by the square root of 1.2 multiplied by 2.13503. अभी देखो कितना आंसर आता है भाई साहब, करिए ना भाई, आंसर आप लोग नहीं निकालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा आंसर निकालिए और चैट बॉक्स में लिखते जाइए। खाली हम कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आप भी आंसर निकालिए।
तो यहाँ पर आएगा आपका 0.58416। करिए आंसर सॉल्व करिए, खाली ऐसे बैठिएगा नहीं, आंसर सॉल्व करिए। तो कितना आता है, ये आ गया है आपका y2। अब सॉरी, ये हमारा f(x2) y2 आ गया। अब y3 निकालिए। तो y3 का फॉर्मूला क्या बनता है, y2 प्लस h टाइम्स f(x2) y2 बराबर ये बनता है। तो अब इसका आंसर कितना आता है देखिए। तो ये y2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.135। हाँ, तो अब ये करिए, तो ये पूरा आपका आंसर मल्टीप्लाइड बाय 0.1 बराबर, और दिस आंसर added with, you add with 2.13, नहीं 13503, 2.1934446 आता है। तो हम उसको थोड़ा सा राउंड आउट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको 446 ले लेते हैं, 445 कर सकते हैं बराबर ना, यहाँ पर 5 कर देते हैं। अब आगे जाते हैं, तो यहाँ पर 3। अब क्या होगा, x3 इज x2 प्लस h, तो यहाँ पर 1.3 आ जाएगा। और यहाँ पर y3 आएगा आपका 2.19345, h है आपका 0.1, f(x2) x3 y3 कैलकुलेट करेंगे। तो अब कितना मिलेगा आंसर देखो। अब आंसर कितना मिलता है, तो आपको मिलेगा 2.19345 माइनस 1.3 करिए, सभी जन कैलकुलेट करें कितना आता है, माइनस 1.3। हाँ हेलो, कैलकुलेट द आंसर प्लीज। हाँ, कैलकुलेट द आंसर नाउ। सो अब देखिए, ये 2.1934 माइनस ये करके आपको 1.3 कर दिया है, और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2.19345 मल्टीप्लाइड बाय 1.3। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0.52909 मिलता है बराबर। 96 भी है, तो 96 को 1 आगे करेंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा, पर हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब यहाँ पर करते हैं ये, अब दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय 0.1। okay, so here you get y4 equal to, y4 formula is y3 plus h times x3, f(x3) y3, this is the formula. Calculating the answer you will get
This answer added with 2.19345. How much you get? You get here 2.246359.6. Okay, this is what you get. This is what you will be getting here as your answer. तो ये मिलता है और काफ़ी बड़ा आंसर है, तो हम इसको एक्यूरेसी को 5 डेसिमल्स तक लाने के लिए 6 कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे डेसिमल्स काफ़ी बड़े थे. अब यहाँ पर 4 करें तो x4 पे आ जाएगा आपको. हमें कहाँ तक जाना है? वी हैव टू गो एंड फाइंड द आंसर टिल 5 steps. So 5 steps we have to go. We will go up to 1.5. Let's see how much we will get here. Here it is x3 and now x4. So x4 is nothing but x3 plus h. So this is 1.4. Now y4 we have got 2.24636. Okay, and here this is 0.1. So let's clear all this stuff and we get here. So yeah, so we edit this part and we get here 2.24636 minus 1.4. So here you get your f of x4 y4 is 0.4772, right? 7725 you can take, 256 it is, then here it will become 256. It's okay. So here it will become 6. Hi, yeah, hi, good afternoon to all of you. Good afternoon, please calculate. I am calculating over here the answer कि आप सबको benefit मिले, पर आप लोग वहाँ पर भी calculate करें और post your answer in the chat. I would be very happy that I know that you are doing for yourself. It would be good thing. So this thing, here we get the answer. Now see, here we got the answer. So 0.4772 we did here, and now y4, say y5. Y5 will be what? Y5 is y4 plus h times f of x4 y4. Answer we have to calculate and get it. So the answer will be how much? It here we will have added 2.24636. So your final answer here will be 2.294085, something it comes, so you can round it out a bit more. Now let us see what happens at 5. At 5, here it is x5, x5 is x4 plus h, right, and that is 1.5, and we need y5. Y5 we have already found, which is 2.94085. So my answer terminates over here. Actually answer terminated here itself because we wanted that, but no problem, that same answer is here. I hope you got this. So now
And see, 5 steps, basically 5 iterations it means. So 0 1 2 3, 0 को काउंट करेंगे तो 5 आइटरेशन तो हो ही जाएगी ना. जीरोथ आइटरेशन पे भी आपने, जीरोथ आइटरेशन नहीं है बेसिकली, पर जीरो पे से हमको y1 मिला. देखो, जीरो थे तो y1 मिला, 1 पे थे तो y2 मिला, 2 पे थे तो y3 मिला. तो मतलब एक एक्स्ट्रा, मतलब जीरो पे है तो आगे वाला मिल जाता है आंसर. तो इसी वजह से हम लोगों को ज़्यादा आंसर ढूंढने नहीं पड़े. सो फाइनली हमने कितने आंसर ढूंढे? 5 आंसर ढूंढ लिए. सो हमारे 5 आइटरेशन ख़त्म हुए. तो यहाँ पर हम बता सकते हैं देयर फॉर y y5 is 2.294085. Okay, and this is at x equal to x5 equal to 1.5. This is the required solution. Now I would suggest you to understand this in a very different way. Also, please remember, this is just numerical calculation. You are not landing up anywhere. Let me show you what is the fun of numerical calculation. Anytime numerical calculation, whenever it is done, calculator है तो आपको दिमाग तो लगाना नहीं है. You don't have to do too much of manual calculation. You just are plugging up the values here and there and getting the answers. But what is the fun in numerical calculation? Let me help you to, oh, once you see on Excel how does this work, you will realize it. So here is your n, here is your xn, yn, and then there is h, then there is f of x, xn, yn. I'm just writing it for some time right now over here. I'll just zoom a bit so that it's visible. And then here you have y, which is n plus 1, right? We have n plus 1, yn plus 1. Now the yn plus 1 formula is nothing but the cell value, right? It is addition of all these cell values. So it is this cell multiplied by the h, right? Multiplied by the h and added with the first value. Basically that's what it is doing. So we'll have this over here. Now let's see how does the whole procedure work in Excel, because on Excel this is a very good thing to understand. It gives you your answers. You'll see the whole process how it is happening, and it is very nice process to understand. Here we had our entry as 0. The next entry at when it was 0, here it was 1, here it was 2, here it is 1, a point 1 is the thing that we have. And now we write our fxn. What was fxn formula? X and yn formula was this minus yn minus xn divided by the square root, right? The square root of the product of the two, this star this. Okay, that's what the formula was. Here we got, see, we got our answer to the same accuracy that we had. Yeah, hi. Oh, hello, welcome Mr. Shete. How are you? Good to see you here. Yeah.
तो अभी आपको क्या करना है, ये तो हमने सम सॉल्व कर लिया, अभी मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि ये देखिए कि ये पूरा जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है वो आराम से आप कर सकते हैं इधर। ये भी आपको आइटरेशंस में ज़्यादा कुछ इतना ये नहीं करना पड़ता है, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कैसे ऐड करना है। और इधर आपको याद रखना है कहाँ से कौन सा रिप्लेसमेंट चालू है। अब देखिए सब ड्रैग होते होते हम कर सकते हैं इधर। आप इधर ड्रैग कर लीजिए, ये भी इधर ड्रैग हो जाएगा, बस ड्रैग करना ही है और कुछ नहीं है इसको तो। बस ये कर दीजिए ड्रैग। ये देखो सारी वैल्यूज आपको मिल जाती है, सिर्फ ज़्यादा कुछ इतना ये नहीं है, और आप आपका पूरा आंसर यहाँ पर आप टैली भी कर सकते हो कि कितना आएगा। मैंने 9 आइटरेशंस विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर ली। आपको ज़्यादा कुछ ये करना नहीं है, ज़्यादा 1-2 मिनट का ही है अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है। और ये काफ़ी इजी है, कुछ इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है। फॉर्मूला आपको खाली मालूम होना चाहिए और बस ये फिर आप अच्छे से ये कर सकते हैं। देखो आपको सिर्फ ड्रैग ही करना है, ड्रैग करोगे तो आपको सब आंसर मिलते जाएंगे। कितने जितने आइटरेशन तक आपको जाना है आप जा सकते हैं और आप सब आंसर्स कैलकुलेट कर सकेंगे। ये आपके, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है और इसमें खास बात ये है कि आपको फाइनल में जो ये आता है ना कि इट इज़ लाइक अ waterfall of numbers. You should be able to understand all these solutions in a proper way. That's it. The whole idea of showing you the thing on Excel is that, see, I showed you over here around 27 iterations. 27 आइटरेशंस करा दी आपको, कभी भी एग्जाम में 27 आइटरेशन नहीं आएंगे आपको। पर आप लोग जब तक समझोगे नहीं कि ये क्या हो रहा है नंबर्स के साथ, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। ये देखो ये पूरा प्रोसेस जो है, इतने सारे नंबर्स आपके सामने आ गए, इट्स लाइक अ वाटरफॉल ऑफ द नंबर्स। ये क्या है इतने सारे नंबर का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हर एक लेवल पे वो आपको सल्यूशन बता रहा है कि कैसे कैसे वो आंसर आएगा। इसके बाद में एक ज्योमेट्री भी होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम राइट नाउ आई वोंट डील इनटू दैट पार्ट बिकॉज इट्स लिटिल बिट different from the topic, but the whole table that we made right now manually, we can do that in Excel also. So ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर आपको सॉल्विंग भी करने को मिलेगा और आपको आसानी से आंसर भी आ जाएगा। चलिए, let us take up another question here. It's very easy, nothing difficult about the whole process, but you just need to know the formula well and the answer you will get in the easy way out. So let us take up a next question. Use Euler's method. Remember, this is Euler's method. Euler modified method is slightly difficult and different from what we have done right now. It has a much detailed version of solution, but we will see it later. Right now we are going through Euler's modified method. Euler's method, Euler modified I will do in next lecture. So Euler's method to solve dy by dx
equals to xy when y0 is 1, find y 0.4. To solve y 0.4, okay, find this, take h equal to 0.1. Like this the question is given to you. Now when such a question is given to you, you will be, it's again very easy question, so it's a very nice thing that you have such easy questions and straight 6 marks. Exam may this kind of questions come for 6 marks. Okay, I'll tell you where you get the marks and where you lose the marks. So given dy by dx is equals to xy, y0 is 1, so here you write down, here x0 is 0, y0 is 1. Okay, f of x comma y is xy and h is 1, 0.1. You write down all these things. So then you write down here, by Euler's method we have yn plus 1 is equals to yn plus h times f of xn yn. N goes from 0, 1, 2, 3 and so on. This is a formula. Once you write down the formula, now there are two options: either you make the table or you show the manual calculation. I showed you the table in the previous answer, so now I'm going to do the manual way out. Okay, so let's do the manual. Table is also good thing, manual also you should know, so I'll do the manual one. So when n is equals to 0, here the formula becomes y1 equals to y0 plus h of h times f of x0 y0. So the formula y0 is 1, h is 0.1, f of x0 y0 is x0 y0, right? So y1 is 1.0.1, x0 is 0, so this whole thing goes down to 0, it is 1, so y1 is 1. Okay, here you have this. After this we will अच्छा है ना, ऐसा कुछ भी स्क्रीन पॉपअप हो जाता है कहीं से भी, तो देख लेते हैं. चलिए, सो आई होप यू ऑल आर कैलकुलेटिंग. हेलो, दोज यू आर देयर, आर यू कैलकुलेटिंग? अरे भैया बोलिए, कोई तो कुछ बोलो. हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, यश, आदित्य, ऑल आर देयर और नॉट? तो ये y1 आ गया. अभी यहाँ पर नेक्स्ट, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो n इज 1, तो अब क्या होगा, y2 इक्वल टू y1 प्लस h टाइम्स f ऑफ x1 y1. तो h टाइम्स x1 y1 क्या करेंगे, x1 कितना हो जाएगा, x1 will become x0 plus h. तो x1 will become, x0 was 0, h is 0.1,
So x1 will become 0.1. Therefore y2 equal to 1 plus 0.1 into 0.1 into 1. So your answer will be 0.01, right? And here it will be 0.0 y2. So here you got your answer when x1 is zero point 0.1. Okay. Okay. When n is 2, so what happens now? Here it is y3 plus y2 plus h times f of x2 y2. What is x2? X2 is going to be x1 plus h, that is 0.2. So here you will have y2 is 1.01 plus 0.1 into 0.2 into y2 1.01. So on calculation we'll get some answer. Let us calculate this. So it is 1.01 plus 0.1 point into 0.2 point 1.01. In here it is 1.0302 y3. हा हा हा, ये आ गया है आपका आंसर, देख लीजिए। कौन लिखने वाला है? कोई लिखना ही नहीं है किसी को। कोई उधर कुछ चैट में बता नहीं रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं सब लोग। बैठा टाइम पास करत राहा, और काय करायचं? सगळं गडबड घोटाळा होणार एक्झाम मध्ये, तेव्हा कळणार तुम्हाला. करा, बरोबर करा. यर x3 हाँ, so this is now here you have this. Now you go for calculating when n is equals to. कौन कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या मालूम, पता ही नहीं चल रहा है कितने लोग हैं, बाकी लोग है कि नहीं है. आर यू ऑल देयर? हेलो, हाई लिख दीजिए, या समझ में आ रहा है तो लिखिए कुछ वहां पर. आर यू फॉलोइंग? कोई बता ही नहीं रहा है कुछ. बताएंगे तो पता चलेगा ना. अभी देखिए, आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर रखे हैं, वरना तो हम काम कर रहे होते दूसरा हमारा. आप लोग ही नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? बताइए बताइए. जनता, जनता जनार्दन, है ना, अभी सब यही तो चल रहा है. चलिए अभी देखिए, n3 कितना हो गया. n जब 3 होगा तो y4 हो जाएगा, और यहाँ पर y3 हो जाएगा, और h x3 y3. x3 कहाँ से मिलेगा? x3 x2 में से मिलेगा. x2 प्लस h कर दीजिए तो 0.3 हो जाएगा ये. अब कितना होगा? y3 कितना है? y3 आया 1.0302 आया है. h है हमारा 0.1, और यहाँ पर कितना होगा ये? x3 0.3 मल्टीप्लाइड बाय कितना बनेगा, बताइए.
कितना बनता है बताइए यहाँ पर। y3 के साथ आएगा 1.0302। तो यहाँ से आप कर लीजिए। तो ये तो अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई में ये भी दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन ऐसा है इसलिए, वरना तो ऐसे हर बार नहीं होता है। इसका करें 1.0302 मल्टीप्लाइड बाय ये, थोड़ा सा इजी हो सकता है ये। 1 प्लस 0.1 इंटू 0.3 इंटू 1.0302। तो ये आपका आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पर आपको मिलेगा 1.061106 मिलता है, देख लीजिए। तो ये आया आपका N3 Y4। ओके, अब Y4 कब मिलेगा आपको? ये Y4 है बराबर, तो ये Y4 ही है ना आपका आंसर। Y4 कब मिलता है आपको? Y4 मिलेगा जब X4 तैयार है आपका। तो X4 इज इक्वल्स टू X3 प्लस H बराबर 0.4 हो जाएगा यहाँ पर। और उस पे Y4 होता है जो है 1.061106। हो गया, आंसर इज रेडी। दिस इज द फाइनल आंसर। So we found what is y4 when, so y at 0.4 is nothing but 1.06110. So this is the required answer. I hope you got this, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑयलर मेथड से सॉल्व होता है। तो ये ऑयलर मेथड थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो इसको भी हम एक्सेल में देख लेते हैं। एक्सेल में देखेंगे तो काफ़ी इजी पड़ेगा, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। यही फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज और प्रोसेस तो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। खाली एफ ऑफ एक्स एन वाई एन का फॉर्मूला बदलता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, दैट्स इट। तो ये आपका आंसर आया और यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला अलग है बराबर। तो तो यहाँ पर x स्टार्ट होता था 0 से और y स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो बस अभी कर लीजिए। और यहाँ पर है ये, बस अभी इसको पूरे को यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। इनको भी ड्रैग कर लेते हैं। देखिए हमारा सब आंसर आने लगा है। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी की बात ही नहीं है। अगर एक्सेल आपको नहीं, रुके, इधर ऐसे करना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक मिनट। 1.1 के, हाँ, यहाँ से इधर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2, हाँ एक मिनट, इसको इधर नहीं, ये 0.1। तो चलो इधर देखते हैं, फॉर्मूला में कुछ तो हुआ है। 0.1 अगले स्टेप में 0.1 प्लस 1 होगा, तो ये
0.2 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आएगा ये बराबर है यहाँ पर, तो सेम वैल्यू इधर क्या आ जाएगा, यस 2.20, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका आंसर 1.302। बराबर है? आपको समझ में आया ये कि नहीं? तो ये आपका 1 यहाँ पे 2 हुआ। अब इस पे क्या होगा, 0.3, हाँ इसको ऐड कर देते हैं सब जगह पर, यहाँ तक ले आते हैं, तो ये सारे वैल्यूज अपने आप आ जाएंगे। रुको, इधर से भी आ जाएंगे सब। नहीं नहीं, रुको, ये कहाँ से आया था, हाँ इधर, इसको ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये ड्रैग कर दो, अब करो ड्रैग, बराबर, और ये सब चेंज हो जाएंगे। ये देखो सब वैल्यूज आ गई हमारी। तो यहाँ पर ये बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से आ जाइए। तो देखो 7 वैल्यूज तक, तो 0.7 तक हमने निकाल लिए। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया? तो ये टेबल से इस तरीके से कर सकते हैं, और आप यही टेबल आपको आगे चल के आप डाल सकते हैं आपके आंसर में, या तो आप टेबल वाले मेथड से करो या मैनुअल कैलकुलेशन से, आंसर सेम ही आता है। ओके, मैंने आपको डिटेल्ड आंसर यहाँ पर बता दिया है, आप अपने आप कर सकते हैं आगे। ये आप यहाँ से फिर कितना भी चाहो ड्रैग करो तो वो तो ले ही जाएगा आगे उसको। ये देखो, जितना आप ड्रैग करोगे वो उतना नंबर आगे लेके जाएगा। This is all differential equations, so ये depending upon the nature of the differential equation, your solutions have a different answer. So here I showed you up to 18 iteration, इतना तो एग्जाम में नहीं आता, 4-5 iteration तक का ही क्वेश्चन होता है ज़्यादातर, ठीक है? और उसी में आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी 6 मार्क्स मिलेंगे कहाँ पर, देखो, तो पहला 1 मार्क आपको, first 1 mark you generally get on detecting all these condition, 1 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो सब वहाँ पर लिखा ही हुआ रहता है। ओके, आपका करेक्ट फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क मिल जाएगा, और यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी कैलकुलेशंस एंड आइटरेशंस यू हैव, योर रिमेनिंग 4 मार्क्स आर हियर। Okay, so your remaining 4 marks you get for all the 4 iteration, one mark for each iteration, and for your final answer half mark will be there, something like that. So these are how your marks distributed in these kind of questions. So please remember that when you do these questions, then you do it carefully. Let us now understand, let us take up some another kind of question also, because all these are same. You can try and practice your answer on your own. Euler method, there is nothing big, magic out of the box, but let me help you how all these things are there. They are all derived from something called Taylor series formula and all. um, we will see those derivations some another time. We will now focus on something called as Euler's modified method, because Euler modified method, I'll give the formula today, we will do the questions next time. I'll again give the formula at that time also, but then those who are here today, let them benefit again on that. Euler modified method, Euler's modified
method, you will be given again a differential equation given dy by dx equals to f of x comma y x naught at y at x naught is equals to y naught. This will be given to you. Then right now we have the formula here. Here the k plus 1th approximation is given by yn plus 1 k plus 1th at yn plus h by 2 f of xn yn plus f of xn plus 1 at yn plus 1 at kth approximation here. And what is the another formula for yn plus 1 at kth approximation here, yn plus k times f of xn yn. Sorry, here it is k, it is h times xn yn. Here there are two runners are there. K goes from 0 1 2 3 4 like that, and n goes from 0 1 2 3 4 like that. Now this has two methods, two runners, so you have to be little bit careful while solving. Okay, so for today I'll be doing only this much. In this there is only Euler's method for you people that I have dealt. I will deal Euler's modified method next time. Thank you. Thank you for joining in. Have a nice day. If you have any doubt, you can ask me in the chat section. Alright. Thank you.